Hey guys, welcome back to our channel. So in this video I'm just going to tell you all that how can we make presentation with the help of Canva without using PowerPoint presentation. There are lots of features that are already equal to the features of the PowerPoint presentation. There are other things also. It is a multi-based resource for all of us that we can make from with the help of Canva, right? So we can make YouTube thumbnail, YouTube banner, and some stories cards. There are lots of print products, video, social media presentation. We have docs, and we have whiteboards, websites. There are lots of things that we can make with the help of Canva. So similarly in that all of the options, we have one option, that is presentation. So we are going to make a presentation today with the help of Canva. So basically देखो क्या है कि कैनवा के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, उन्हीं में से एक प्रेजेंटेशन है, राइट? सो इन दिस मैंने एक प्रेजेंटेशन ऑलरेडी रेडी किया है, बिकॉज इफ़ आई गो और मैं आपको पूरा बताऊं कि कैसे क्या क्या स्टेप्स के साथ, सो दैट वीडियो विल बी गोइंग टू बी बोरिंग. बट हियर आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू दैट कि कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको आप प्रेजेंटेशन बनाने के टाइम इनको यूज़ कर सकते हो, राइट? सो एक बार आपको पता चलेगा कि यार सिंपली वी हैव टू गो हेयर, कैनवा के वेबसाइट ओपन किया, एंड इफ़ यू आर नॉट लॉग इन यू कैन जस्ट सिंपली लॉग्ड इन, एंड आफ्टर दैट हियर यू विल गेट द ऑप्शन ऑफ प्रेजेंटेशन, राइट? एंड उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन के काफ़ी सारे टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे. सो आप उन्हीं में से किसी टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हो, राइट? सो ये एक प्रेजेंटेशन जो कि मैंने बनाई है दैट इज़ ऑन योगा, राइट? सो यहाँ पे देख सकते हो कि इस पेज पे मैंने काफ़ी सारे ग्राफिक्स एलिमेंट्स को यूज़ किया है, राइट? एलिमेंट्स हैं यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे, एंड सी एक बहुत ही बढ़िया फीचर है दैट इज़ कि आप इसको वीडियो के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, सेम जैसे कि हम पावर पॉइंट के अंदर करते हैं. उसके अंदर ऑडियो वीडियो हम इजीली ऐड कर सकते हो. सेम चीज़ यहाँ पे भी है, बेसिक ऑलमोस्ट आपको यहाँ उससे ज़्यादा फीचर्स मिल जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वहाँ से कम फीचर्स मिले, राइट? सो सी दिस प्रेजेंटेशन, लेट मी प्रेजेंट इट. सो जैसे आपने अगर प्रेजेंटेशन बना लिया, आपको प्रेजेंट करना है, तो यू विल गेट दिस ऑप्शन एट द कॉर्नर एंड यू हैव टू just simply click on it, and then here you will get the option of present with watermarks and remove watermarks, right? So present with watermarks, that is for free, and if you are using the paid version you can use this option which is remove watermarks, and just simply click on the present, right? So this is the see, it's going to be present. Just you have to simply click enter and all, and see यहाँ पे हम वैसे एनिमेशंस और ट्रांजिशंस यूज़ कर सकते हैं, राइट? दिस इज पेज 2 and this is going to be page 3, page 4, 5. So in this presentation I had just added all the above things about yoga, and after all I'll be the thanking in this. So this is a presentation of only 10 slides, right? So 10 slides से ज़्यादा की भी आप बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि you can't make. So unlimited slides वाली option है, you have to simply click on this add page and you can add and all over whatever how many pages you can add in it, right? See here in this side, जिन लोगों ने YouTube थंबनेल्स बनाई है कैनवा के लिए, दे विल बी वेरी बेस्ट फॉर दिस, कि उनको एक भी ऑप्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी. दे कैन यूज़ हियर फ्रॉम एलिमेंट्स में आपको एक एक चीज़ें, ग्राफिक्स, शेप्स, स्टिकर्स, जो भी आपको चाहिए. सी इफ़ आई एम गोइंग टू राइट हियर फॉर द फ्लावर्स, राइट? जस्ट ओके, फ्लावर्स. सो फॉर फ्लावर्स यू विल ऑल इन दैट यू विल ग्राफिक्स, एलिमेंट्स में आपको ग्राफिक्स मिल जाएंगी, यहाँ फोटोज़ मिल जाएंगी, यू विल गेट द वीडियोज़, इवन यू विल गेट समथिंग. अगर कुछ फ्लावर्स से रिलेटेड कोई ऑडियो है तो इट कैन बी, राइट? मीन्स फ्लावर्स से रिलेटेड अगर कोई सॉन्ग्स हैं तो सी फ्रेम्स यू विल गेट. सी फ्रेम्स के अंदर जैसे कि मैंने फ्रेम्स को मैंने यहाँ यूज़ किए हैं, इनके अंदर मैंने फ्रेम्स यूज़ किए हैं. let me tell you about this. So इस फोटो को ऐड ऑन करने के लिए, और दिस इज़ द वन मोर फोटो, फॉर दैट आई हैड यूज द फ्रेम.
So this is the one which is in I had used the frame. See, मैंने इस this is in the rectangular photo and I just converted into the circular one, right? So this can be used for the frames and here charts can be. Flowers के लिए कोई charts तो obviously नहीं होगा, so charts भी आपको मिल जाएंगे. See here from you can get the all the above related text. जैसे भी आपको styling चाहिए text की वो सारे कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा. And here something brand hub जो कि logos के लिए होता है and that is all above the paid version, but you can try it for free also. Now uploads, like कुछ ऐसे extra versions आपको कुछ photos videos add on करनी है, like something personal photos, like so in this presentation in this slide I had added this picture. This is a something personal photo which I can't get online, right? So for this you can just simply click on the upload files and from here you can upload image, video and audio. You will get this sections for this also. This is the section of image and here video and then audio, right? So now we can have the option of draw also, like you can just, if you are using this presentation for teaching, right? If you are teaching someone, so you can just use this for just to draw, write, right? Now projects, you can add some projects links, means like if I'm going to have the other projects also, so you can just add those projects links, you can connect them, right? Now apps, there are lots of options. I can't explain all of them in a single video. It will take around a very that will bigger this video, right? So see, so this is all about in this video. I hope you get all the information about that how can we make presentation. This is a very simple way. You will get all the things. If you get any difficulty, like what you think that how can I make this option or that, like एनी ऑफ थिंग दैट जो कि आपको प्रॉब्लम आए कि जैसे हमें कोई एक ऑप्शन नहीं मिला है लाइक ट्रांजिशन और एलिमेंट्स कैसे ऐड करने हैं, तो उसके लिए आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में यूज़ कर सकते हो. लाइक सी, अगर मुझे इस टेक्स्ट में आपको एक इफेक्ट का बता रही हूँ, जैसे आपको ट्रांजिशन में या फिर एनिमेशन में कुछ प्रॉब्लम आए, तो उसके लिए जस्ट फॉर अ टेक्स्ट यू कैन ऐड दिस फॉर द इमेजेस ऑल्सो, राइट? व्हेन यू विल सेलेक्ट दिस वन you will get some options over here. You can get the option of styling and the font size and text color, here bold, italic and alignment. This is list, spacing, and here you have the effect. So when you will click on the effects, you will get something like none curve. You just for the shaping, right? You can shape this, like if I'll click on the curve, see this is changing the shape of the text. Now here you can just adjust the curve also, like this curve or the 82, 89, whatever you curve you want, you can just add it over here. Now glitch, this is all about the text effect, right? And you have something else also, that is animate. So here animate like this, fade, pan, rise, wipe, breathe, and there are all the above animations options also, that both on enter or exit you can add them, right? You have other options like baseline, drift and tectonic. There are lots of animations that you can add in your slide. So I hope this is clear to you all, and this is not for the text only. You can add this to the video, images, even if you are adding a audio file, so you can add to that one also, right? So I hope everything is clear to you all, and if you get any difficulty while doing this, you can just drop a comment down below, and after that I can just solve your problem. I hope you like this video. If you like this video, just do subscribe.